पाकिस्तान में बड़ी एंटिसिपेशन रही है। आपने हैवल का शायद नाम नहीं सुना होगा, but discreetly they've been competing against the Japanese and Koreans for some time. They hired Land Rover ke designers. China promises you bang for its buck. We have the Haval. अगर आप मार्वल के फैन होंगे तो you're gonna love Thor's hammer style headlamps. ये follow through करता है with the daytime running lights with some fake vents. उन्होंने inspiration ली है Swedes से. Haval have brought the latest generation to Pakistan, not like its competitors जो हमें एक generation पुरानी देते हैं. Everything about the design is new, fresh, dynamic, sleek. Bonnet के lines, the big grill जो आपको शायद space से भी नजर आएगा और छोटी सी garnish दी हुई है नीचे जरा quality की touch देने की. Two-tone 18-inch alloy wheels जो एक ढेरी जहाज के propeller की तरह resemble करता है. Your side mirrors with your integrated indicator और 360 view के लिए कैमरा भी. Keyless entry और आपके पास tinted windows. जब आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं, the first thing you see of a car is the back side. और इसकी back lights Polestar की तरह. I mean Polestar, not Polestar. Diamond finish और LEDs inside. GWM representing the mammoth the company is. नीचे आपका chrome, subtle finishes with a diffuser and a rounded back with a bit small windscreen. Shark fin with beautiful brushed roof rails. But generally, if I was sitting in traffic and saw this car, I'd want to know कि क्या चीज़ है ये. Boot space wise, now I thought the Chinese had big wads of cash, but seems like they didn't want to spend too much in Pakistan. Hence, आप disappoint ना होइएगा कि ये manual है. Look at that. आपके पास जगह है enough for your baggage, और अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए, आप ये parcel shelf remove करके seats नीचे कर सकते हैं. In the Haval Julian, the instrument cluster की जो resolution है, I think is bang on. Steering wheel, plush और soft. हर जगह आपको छोटी-छोटी touches दिए हुए हैं. ये interior minimalistic है. Thanks to the JLR design concept or Mr. Peter Simmons. Gear knob आप recognize कर सकते होंगे. Land Rover, Jaguar, now Haval. This beautiful, just over 12-inch screen infotainment system, गाड़ी की dual zone air conditioning भी control करता है, safety features, as well as your music. Below that, ये buttons जो हैं, they're not buttons, they're touch screen. Beautifully done. और ये जो plush leather honeycomb styling किए हुए हैं, it's giving it a really good touch. इधर आपके दो cup holders हैं. One big, one small. I wonder why. Oh well. जो leather quality है eco leather, but बहुत deceptive है. आपका जो passenger seat है, वो manual है. Drivers 6-way electric. और headroom is very nice. आपको बड़ी अच्छी feeling आएगी इस cockpit में बैठ के. And of course, जब आप ऊपर देखेंगे, एक beautiful panoramic sunroof. Remarkable. मैं competitors के back seat में हर बार बैठा हूँ and leg space is outstanding. Headroom भी सिर भी नहीं लग रहा. Good quality feeling भी है. इधर आपका brushed aluminium, rose gold, lovely quality materials. नीचे दो vents हैं आपको ठंडे रखने के लिए और दो USB chargers. Isofix seats और आपका armrest
for your cup holders. Center seating, very good. And you have storage behind the seats. और आपके side doors पे भी you've got another storage area for extra bottles. It's just got a lot of space. Now, let's take Mr. Jolyon for a ride. इस गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है रिलीज ही नहीं होगी until you put your seat belt on. So, safety is paramount. It's a good start for Chinese CBUs because all of them are coming with great safety features which will now pop up on your screen. In safety features में से एक blind spot assist है which comes in very handy because हर 2 सेकंड बाद एक मोटरसाइकिल या बत्ती के साथ या बत्ती के बगैर शाम को गुजरेगा और आपको पता चल जाएगा. नाउ लेमन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स ये हैं कि ये गाड़ी को लाइट वेट बनाती है और इसकी बॉडी को रिजिड. इनिशियली जो मैं पिकअप कर रहा हूं वो है हेड्स अप डिस्प्ले और उसकी रेजोल्यूशन बहुत शार्प है. 360 व्यू वाइज वेरी गुड व्यू एज वेल. आपको क्लैरिटी आ रही है हर जगह. रेयर व्यू मिरर का मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि मैं जरा देखूंगा बिकॉज मुझे साइज छोटा लगा था एंड आई कैन से कि पीछे जरा सा आपको है व्यू का. सस्पेंशन जो है इसके डैम्पर्स आर हैंडलिंग द रोड वेरी वेरी गुड. थोड़ी सी टायर नॉइज है बट वेरी स्लाइट. गाड़ी प्लांटेड फील कर रही है. ये नहीं कि आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी. और ऑन द प्लस साइड जहाँ कुछ इसके कंपेटिटर्स की सस्पेंशन ज़रा हार्डन्ड है ताकि बॉडी रोल को कम करने के लिए इसकी सस्पेंशन बहुत वेल बैलेंस्ड हुई है कि आपको बॉडी रोल मिनिमल भी है बट ऑल्सो सस्पेंशन कंफर्टेबल. कोई गाड़ियों में ये आ गया है कि आपको कोई डायरेक्ट रोड की फीलिंग नहीं आती. विद दिस यू आर गेटिंग अ रोड एक्सपीरियंस एंड ओवरटेकिंग पावर इज very good even in normal mode. That's obviously an exaggeration. Let's get to some figures. इस गाड़ी में 1.5 turbo engine है पेट्रोल जो प्रोड्यूस करती है 147 हॉर्स पावर और आपको मिलता है 210 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इट्स वेरी गुड डायरेक्ट. किया से बहुत क्वाइटर है और रिस्पॉन्सिव भी है और ज़्यादा टॉर्कियर भी फील कर रहा है. इसके साथ 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स आता है. जब आप पैडल यूज़ करेंगे जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ आप गियर्स होल्ड कर सकते हैं और आप बिल्कुल मैनुअल की तरह चला सकते हैं या शू मेकर की तरह या मेरी तरह. अब DCTs की कभी कभार डाउनफॉल ये होती है कि आपको कभी कभार जर्की से गियर चेंजेस मिलते हैं. इसमें आपके पास वो नहीं है. Haval, you have done a good job. Jolyon में आपको लुक्स और क्वालिटी मिलेगी but you'd expect quality since ये गाड़ी पाकिस्तान में असेंबल नहीं हुई. Grill पे huge logo and the Haval badge at the back are a bit ostentatious, but I'd say that's down to your personal taste. Some subtlety would have helped. अगर जापानीज ने एक एरिया में अपने आप को प्रूव किया है वो है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी. With all these new Chinese brands with their fancy DCT gearboxes mated to small turbo engines, we just don't know if they'll survive in the long run. For now, these new entrants are a breath of fresh air. This is Park Gear. Thank you for watching. Like and subscribe.